Hello, good afternoon, student. My name is Cyril Raval. Today's date 19 January 2021. Standard 7th, subject Science. Chapter number 3, Fiber to Fabric. This is first we have studied the multiple choice questions. Student, this is our revisions video. Okay. Uh, I already completed this chapter in textual. So let's start. Question number 1. The rearing of silkworms for obtaining silk is called cocoon, silk, sericulture या silviculture. So my answer is sericulture is a practice of rearing silkworms for obtaining silk, while silviculture is a practice of developing and carrying forest. Question number 2. Which of the following is not a type of silk? Mulberry silk, Tasara silk, Muga silk या moth silk? तो my answer is moth silk. Moth is the silkworm under development inside a cocoon. Mulberry, Tasar and Muga are varieties of silk produced by different rearing practices. Question number 3. Paheli wanted to buy a gift made of animal fiber obtained without killing the animal. Which of the following would be the right gift for her to buy? पहेली को क्या चाहिए था? पहेली को गिफ्ट मीन्स के बाय करनी थी, ठीक है, और वो एनिमल फाइबर से बनी हुई हो विदाउट किलिंग द एनिमल, एनिमल को किल किए बिना. ओके, तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी? वुलन शॉल, सिल्क स्कार्फ, एनिमल फर कैप या लेदर जैकेट? तो रेस्ट ऑफ द ऑप्शन गिवन हियर आर ऑब्टेन बाय किलिंग एनिमल्स. ए जो है वो नहीं है, बट वूल इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम शेयरिंग ऑफ स्किन ऑफ शिप. बट जो वूल है वो क्या कहाँ से ऑब्टेन होता है? जो हम शीप होते हैं उसकी शेयरिंग करें तभी हमें वूल जो है वो मिलता है. तो विदाउट किलिंग द एनिमल वी गेट वुलन शॉल, ठीक है. बाकी सिल्क के जो कीड़े होते हैं उसको गरम गरम पानी में डाला जाता है तो हमें सिल्क मिलता है. एनिमल फर का कैप के लिए भी हमें उसको किल करना पड़ता है. लेदर जैकेट के लिए उसका लेदर ही निकालना पड़ता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ शिप, कॉटन बॉल, cocoon या शाइनी जूट स्टॉल? So my answer is cocoon. Cocoon is one of the stage of life cycle of silkworm. Fleece of sheep gives wool, cotton ball gives cotton and jute stalk gives jute fiber. तो सिल्क फाइबर्स जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? तो कोकून से मिलते हैं. ओके, कोकून इज़ द वन ऑफ द स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म. लास्ट में हम सिल्कवर्म की जो लाइफ साइकिल है वो स्टडी करेंगे, जिसमें एक स्टेज जो होता है वो कोकून स्टेज भी होता है, ठीक है. फ्लीस ऑफ शिप जो है वो वूल के लिए है. कॉटन बॉल जो है वो हमें कॉटन देते हैं, गिव्स कॉटन. एंड जूट जो होता है, जूट स्टॉक गिव्स जूट फाइबर, उससे हमें जूट फाइबर मिलता है. कोकून ही एक ऐसा स्टेज है जिससे हमें जो है हम सिल्क मिलता है. क्वेश्चन नंबर 5. वूल फाइबर कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? वूल फाइबर जो है वो हमें कहाँ से
मिलता है। वूल फाइबर कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम विच, नहीं मिलता है, कहाँ से नहीं मिलता है। सो गॉट, लामा, एलपका एंड मॉथ, किस में से हमें वूल नहीं मिलता, तो मॉथ में से, कि मॉथ जो है वो सिल्क मॉथ है, वो इंसेक्ट है। मॉथ इज एन इंसेक्ट वाइल अदर थ्री आर द एनिमल्स विथ फर विच प्रोड्यूस वूल। गॉड के फर में से हम वूल मिलता है, लामा में से मिलता है, अल्पका में से भी मिलता है ना, बट ओनली मॉथ इज अ इंसेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, सिलेक्टिव ब्रीडिंग है वो कौन सी प्रोसेस है। सो सिलेक्टिंग द ऑफस्प्रिंग्स विथ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, बी जो है वो है सिलेक्टिंग द पैटर्न विथ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, सी जो है वो है सिलेक्टिंग एन एरिया फॉर ब्रीडिंग, और डी जो है वो है सिलेक्टिंग फाइन हेयर फॉर गुड क्वालिटी ऑफ वूल। तो सिलेक्टिव जो ब्रीडिंग है उसकी प्रोसेस जो है वो कौन सी हुई। सो आंसर होगा बी, हैंड सर्टेन डिजायर्ड ट्रेट्स मीन्स के प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट्स आर कंसिडरेड बिफोर ब्रीडिंग, इट इज़ कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। वो जो हुआ वो हुआ सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, सिलेक्टिंग द पैटर्न्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज। Another questions, the general process that takes place at a sheep shearing shed is A. Removal of fleece, B. Separating hair of different textures, C. Washing of sheep fiber to remove grease, D जो है वो है रोलिंग ऑफ शीप फाइबर इनटू यार्न। तो आंसर होगा ए, रिमूवल ऑफ फ्लीस इज कॉल्ड शीप शेयरिंग, सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर is called sorting, washing wool to remove grease is called scouring, and rolling of sheep fiber into yarn is called rolling. Okay, so my answer is A, removal of fleece is called sheep shearing. Question number 8, the term सेरीकल्चर इज़ यूज्ड फॉर। तो सेरीकल्चर जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है। कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, मेकिंग सिल्क फैब्रिक फ्रॉम सिल्क यार्न, या प्रोडक्शन ऑफ साड़ीज। तो सेरीकल्चर इज़ द रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर। सेरीकल्चर मीन्स सिल्क फार्मिंग। सेरीकल्चर का मतलब ही हुआ सिल्क फार्मिंग। Question number 9, reeling of silk is a process of making silk reels, spinning of silk fibers, weaving of silk cloth, या the process of taking silk threads from the cocoon। तो आंसर होगा डी, reeling of silk is the process of taking out threads from the cocoon for use as silk। Question number 10, silkworms secrete fiber made of fat, cellulose, प्रोटीन या नाइलॉन। तो आंसर होगा सी, सिल्क प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ सेरिसिन एंड फिब्रिन, मेनली फैट एंड सेल्यूलोज आर नॉट प्रेजेंट इन सिल्क। नाइलॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर, नाइलॉन जो है वो सिंथेटिक फाइबर है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ इंक्लूड फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, fibers are obtained from animals' silk. Fiber come from blank of silk. तो silk and wool.
Silk fibers comes from cocoon and silkworm. Wool yarding animals bear fleece on their body. Then hair trap a lot of air, which is a poor conductor of heat. Question number 12. State whether the following statements are true or false. In false, correct them. First, silkworms are caterpillars of silk moth. In India, camels and goats are generally reared for obtaining wool. The rearing of silkworms for obtaining silk is called a silviculture. फर्स्ट में क्या होगा? सिल्कवर्म्स आर कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मोथ, तो ट्रू. सेकेंड है, इन इंडिया कैमल्स एंड गॉड्स आर जनरली रेड फॉर ऑब्टेनिंग वूल, तो फॉल्स. शिप्स आर मोस्टली रेड फॉर वूल इन इंडिया. सी जो है वो द रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म फ्रॉम ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड अ सिल्वी कल्चर, तो फॉल्स. इट इज कॉल्ड अ सैरी कल्चर, उसको हम सैरी कल्चर कहते हैं. सिल्वी कल्चर इज कैरिंग एंड डेवलपिंग फॉरेस्ट. In the process of obtaining wool from fleece, sorting is done after scoring, so true. Yak hair are not used to make a woolen fabric, so false. Wool can be made from sheep, yak, llama, camel, alpaca and goats. Question number 13. How do the hair of certain animals help in keeping their bodies warm? So hair. Hair of these animals trap a lot of air. Air is poor conductor of heat, so the air trapped in hair of these animals prevents their body heat from being lost of cold surroundings and keeps them warm. Short type questions. Match the following. फर्स्ट जो है वो है याक वूल, उसका आंसर होगा तिब्बत एंड लद्दाख. अंगोरा गॉड्स, सो आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. मलबेरी लीव्स, so answer is silkworm. And scoring, so answer is for shaved hair. Question number 15. Various steps involved to obtain wool from fleece are given here. Picking out the birds, dyeing in the various colors, sharing, scoring and sorting. Write the above steps in the correct sequence in which they are carried out. So the correct sequence is sharing, then after scoring, then after sorting, then after picking out of the birds, then after dyeing in various colors. Then some of the related with the silk are jumbled up. Write them in their correct form. फर्स्ट होगा सेरिकल्चर, सिल्कवर्म, मलबेरी एंड डी जो है वो है रीलिंग. क्वेश्चन नंबर 17. Figure shows three rings of the circles with letters in them. Some of these letters in each ring can form the name of one wool yielding animal. Find the names of these animals. Okay, तो कौन से एनिमल्स है? फर्स्ट है याक, कैमल एंड शीप. Question number 18. Write a captain for each of the figure
गिवन एज फिगर A2D। फर्स्ट जो है वो है एक्स ऑफ सिल्क मॉथ ऑन मलबेरी लीफ। सेकंड सिल्कवॉर्म का पिक्चर्स है। थर्ड जो है वो है कुकुन है। और डी जो है वो कुकुन विथ डेवलपिंग मॉथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेप फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ सिल्क आर गिवन बिलो इन अ जम्बल्ड ऑर्डर। तो हमें उसको अरेंज करके लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट आएगा फीमेल सिल्क मॉस ले एग्स। फिर आएगा एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। थर्ड है द लार्वा इसके caterpillars of silkworms are kept in clean trays along with freshly chopped mulberry leaves. Then after 25 to 30 days, the caterpillars stop eating and start spinning cocoons. Then next cocoons are kept under the sun or boiled in water. Then fibers are taken out from the cocoon. Here question number 20, match the following. First है pashmino shawl. So answer is Kashmiri goat. Second है woolen carpet. So answer is first camel wool. Third है baby blanket. So answer is Angora wool. And D है woolen sweater. So answer is sheep wool. Then this is long answer questions. Complete the paragraph related the life history of silk moth by filling in the blanks. First है the A. Female silk is mothless. Then B. Eggs from which hatch. C. Larvae called. Then caterpillars or silkworms. They grow in size and when in caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa. It first weaves a covering to hold itself, which is known as a cocoon. Question number 22. Paheli went to the market. Paheli went to the market to buy saris for her mother. She took out a thread from the edge of the two saris shown by the shopkeeper and burned them. One thread is burned with a smell of burning hair and the other burned with the smell of burning paper. Which thread is from a pure cotton sari and which one from a pure silk sari? Give reason to for your answer. हमको reason क्या देना है? तो in first sari, one thread which burned with the smell of burning hair is from a pure silk. Hair जैसी smell आती है वो pure silk का है. Silk and hair are protein fibers. So on burning these threads, the smell of burning hair comes out. In second sari, second thread which burn with the smell of burning papers is from a cotton sari. Since cotton and paper both are carbohydrates and on burning they gives a similar smell. Okay, जिसमें hair जैसी smell आती है वो silk है और जिसमें हमें पेपर जैसी स्मेल आती है वो है कॉटन. देन एक्सप्लेन द फ्रेज यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ द मेकिंग ऑफ फैब्रिक फ्रॉम फाइबर. तो फाइबर्स एंड फैब्रिक play a large role in everyday application. A fiber is a hair-like strand of material. They are the smallest visible unit of fabric and denoted by being extremely long in relations to their width. Fibers can be spun into yarn and made into fabric. A single fiber is too weak to break, but when some fibers together make a fabric, it is difficult to tear. Fabric needs more energy to tear apart as compared to a single fiber. The next questions. Write various steps of processing fibers into wool. The first process is sairing की. This is the first step. The shed hair is washed throughout the remove grease, dust and grit. Then sorting in this step, different textures of the hair are separated, sorted. Then separating birds. Birds are small fluffy fibers which are picked out from the hair. Then dyeing, the fibers are dyed in various colors as the original color of fleece are usually black, white and brown. Then rolling in this process,
The fibers are straightened, combed, and rolled into yarn, and the fibers now as wool are ready to the woven. This is the diagram of history of the life cycle of the silk moth. Okay, the female silk moth lays eggs on the leaves of a mulberry tree. The eggs hatch to form larvae called a caterpillar of silkworms. The silkworms grow in size, feeding on mulberry leaves, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa, it first weaves a covering to hold itself, which is known as a cocoon. Pupa develop inside cocoon into moth and comes out as in the adult male or female silk moth. Okay, so completed chapter number 3. Thank you.